Hello, Bacho. Let's read the question. Read the passage given below. Despite plenty of naysayers, the textbook is dead. It just doesn't know it yet and continues on walking about us through our life. I even have one, a textbook of physics on my bookshelf beside me that was printed in 1891. It has some line drawings and no color. Today, textbooks have a lot of colors and images and engaging questions sprinkled about them. They also have tons of advice for teachers on how to use them effectively. सो बच्चों पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि टेक्स्ट बुक नेसियर्स ये कहते हैं कि टेक्स्ट बुक मर चुकी है, टेक्स्ट बुक आपको यूज नहीं करता। तो जो ऑथर है इस पैसेज का वो ये कहता है कि उसके पास एक फिजिक्स की बुक है जो 1891 में छापी गई थी और उसमें लाइन ड्राइंग्स हैं विदाउट एनी कलर। तो आजकल की किताबें बहुत अलग हो गई हैं, उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं और टीचर्स को ये भी बताती हैं कि बच्चों को इफेक्टिवली कैसे पढ़ाया जाए। The word textbook originated in the 1720s, almost 300 years ago. It's had a good run and is ready to retire. Those who argue that you cannot learn well without a textbook ignore the centuries prior to 1720 when lots of people learned and learned well with no textbooks anywhere. You can learn without textbook, that's certain, but why should you bother to change something that's worked for 300 years? Many deliver the verdict in a single word, technology. That's way too simplistic. So बच्चों टेक्स्ट वर्ड का इजाद हुआ था, ओरिजिनेट किया था 1720s में, और ये कहते हैं कि ये 300 साल से चलती आ रही है। पर पहले लोग कैसे पढ़ते थे 1720 से? तब भी तो टेक्स्ट बुक्स नहीं होती थी। तो आजकल के लोग कह रहे हैं कि बिना टेक्स्ट बुक के भी पढ़ा जा सकता है टेक्नोलॉजी से। Now, paragraph 3. We have seen film loops, overhead projectors, motion picture projectors, machine scoring of tests, and myriad of technological innovations in classrooms. But the textbook remains. No technology alone will not end the reel of the textbook. It takes something more that became available in the 1940s, the programmable electronic computer. But here we are, 70 years later, with plenty of textbook visible. The computer was not sufficient by itself. तो बच्चों ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पर टेक्स्ट बुक्स को अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाई है कंप्यूटर्स के आने के बाद भी। Paragraph 4. The next big change began with an ARPANET in the 1960s. The foundation led to the internet and its growth has been phenomenal. But a widespread communication medium alone is not sufficient for the textbooks either. Inexpensive computers, easy to use interface, GUIs are ready access to internet all contribute. तो बच्चों इंटरनेट के आजाद के बाद, ARPANET के आजाद के बाद भी टेक्स्ट बुक्स को अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है और ये बोलते हैं कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू रिप्लेस टेक्स्ट बुक्स येट। Paragraph 5. Fine, say many, but the textbook publishers are putting their books online. They are creating e-textbooks, so textbooks live. तो बच्चों ये कहते हैं ठीक है कंप्यूटर्स आ गए हैं, बट टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स अब अपनी किताबों को ऑनलाइन जा रहे हैं और उनको ई टेक्स्ट बुक्स कह रहे हैं, तो अभी भी टेक्स्ट बुक्स जिंदा हैं। This argument misses the essential difference between education technology in earlier times and education technology in the present, other than mere cost. Computer software can be interactive. Previous education technology was like textbooks, rather passive. Active learning is far superior to passive learning, so much so that it's not a step, not a leap, but a rocket propeller launch past old-fashioned learning. तो बच्चों आर्ग्यूमेंट ये क्रिएट हो गया है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो पहले यूज होता था और जो अब यूज होता है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत इंटरेक्टिव हैं, बहुत मजेदार हैं, और जो पहले की एजुकेशन थी वो टेक्स्ट बुक थी, वो पैसिव थी, बट अब ज्यादा इंटरेक्टिव है। The mental engagement with something that determines whether you learn and how well. The really big change will come when students can jump into online situations that are more like real life and are able to use variety of devices to reach the web and become the part of the learning community. They will be guided by a combination of human mentors and machines. तो बच्चों तब हम एक बहुत बड़ा जंप मानेंगे जब बच्चे ऑनलाइन सिचुएशंस में ज्यादा अपनी रियल लाइफ के सिचुएशंस सॉल्व कर पाए, वो वेब पे पहुंचे और एक लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट बने। Furthermore, diagnostic analysis of their work will tell mentors whether students are ready for certain learning and more importantly when they are not. और ज्यादा एनालिसिस तब हो पाएगा जब मेंटर्स ये बता पाए कि स्टूडेंट अभी ये पढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। 8th paragraph, textbooks do not tap into our brains to realize this learning potential. Hence, today textbook is a zombie. It's just waiting for that wooden stake or silver bullet to put it in a well-deserved rest.
तो बच्चों टेक्स्ट बुक्स ये नहीं बताता कि हमारी लर्निंग पोटेंशियल क्या है, इसलिए टेक्स्ट बुक्स आजकल मरती जा रही हैं। बस एक वेट है कि एक वुडन स्टेक या सिल्वर बुलेट, ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है, और फिर उसको खत्म कर दिया जाए जड़ से। नाउ, on the basis of your understanding of the passage, answer the following question. Select the option that can weaken the author's case for complete shift to computer learning in paragraph 6. Option A, the sharp increase in the creation of e-textbooks. Option B, a rising dependency on using technology as a medium of learning. Option C, scholarly articles comparing the effectiveness of online learning with that textbooks. Option D, the development of e-textbooks with activities that require active participation from readers. तो बच्चों क्या हो सकता है? ऑप्शन ए शार्प इंक्रीज, वीकन ऑथर तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक फैक्ट लिखा है कि शिफ्ट हो रहा है, so this can be rejected. Option B, a rising dependency on using technology as a medium of learning. This is also correct. So हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ऑथर के केस को वीकन कर रहा है. Option C, scholarly articles comparing the effectiveness of online learning with that of textbooks. बिल्कुल compare हो रहा है. So this also strengthens the author's case. Weaken तो किसी हाल में नहीं कर रहा है. Weaken क्या कर रहा है? Option D, which is the development of e-textbooks with activities that require active participation from readers. The correct option is option D, the development of e-textbooks with activities that require active participation from readers. I hope you understood it well. Best of luck.